हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एलेलिक एंड नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के ऊपर। जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो आज इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इन मिराबिलस एंड एंट्रिनम प्लांट द अपीयरेंस ऑफ द पिंक हाइब्रिड आर between cross of a red RR and white RR flower parent indicate। यहाँ पे जो मिराबिलस है या एंट्रिनम प्लांट जो है उसका अपीयरेंस पिंक हाइब्रिड बिटवीन क्रॉस ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर पेरेंट क्या इंडिकेट करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Capital RR, red is crossed with small RR white. All RR offsprings are pink. This indicate that R gene is। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा incompletely dominant। क्या आएगा? Incompletely dominant। In case of incomplete dominance, the monohybrid ratio of phenotype in F2 generation is। तो इसका आंसर आएगा 1:2, 2:1। ओके। A white flowered mirabilis plant RR was crossed with red colored RR. If 120 plants are produced in F2 generation, the result would be 90 non-uniformly colored and 30 white. Okay. When the phenotypic and genotypic ratios are resemble in F2 generation, it is an example of। when the phenotypic and genotypic ratio resemble in F2 generation, it is an example of incomplete dominance। Okay। In Mirabilis jalapa, when homozygous red flowered and white flowered plants are crossed, all F2 plants have pink colored flowers। In F2 produced by selfing of F1 plant, red, pink, white flower plants would appear respectively in the ratio of 1:2:1। Okay। In case of incomplete dominance, F2 generation has genotypic ratio equal to phenotypic ratio। Incomplete dominance occurs in Antrinum mirabilis एंडुलेजन फॉल। तो ऑल ऑफ द इबो इसका आंसर आएगा। ठीक है। विच क्रॉस यील्ड्स रेड, व्हाइट एंड पिंक फ्लावर्स वैरायटी ऑफ डॉग फ्लावर्स। द आंसर इज R into R। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r। What shall be a ratio in offspring when a roan cow is crossed with a white bull। यहाँ पे अरुण है, यहाँ पे व्हाइट बुल, जो व्हाइट बुल के साथ कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1:1। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ। तो आंसर आएगा लिंकेज भी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है, कोडोमिनेंस भी है। ऑल ऑफ द इबो जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। In a dihybrid cross, when one pair of alleles show incomplete dominance, the genotype ratio comes to 1:2:2:4, 1:2:1:1। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है। In dihybrid cross, when one pair of alleles show incomplete dominance, genotype ratio comes to 1:2:2:4:1:2:1:1। Okay। The phenomena of incomplete dominance was observed by Corins।
Mendel did not propose. Mendel did not propose. The answer is incomplete dominance. Mendel proposed dominance. Mendel proposed segregation. Mendel proposed independent assortment, but Mendel did not propose incomplete dominance. Gene which suppresses the effect of another gene. Gene which suppresses the effect of another gene not located on the similar locus of the homologous chromosomes. तो आंसर आएगा इपेस्टेटिक जीन. ठीक है, इपेस्टेटिक जीन जो है इसका आंसर आएगा. The phenomena in which all allele of one gene suppresses the expression of an allele of another gene is known as. The answer is epistasis. The phenomena in which an allele of one gene suppresses the expression of an allele of another gene is known as epistasis. When two independently assorted dominant genes interact with each other to produce particular phenotype, but when they present alone they do not produce phenotype, they are called. तो they are called complementary gene. ओके, इसको आप एक बार फिर देखो क्या है. When two independently assortment dominant gene interact with each other to produce particular phenotype, but when they present alone they did not produce phenotype. तो इसका जो आंसर आएगा complementary gene. AB blood group shows. AB blood group shows codominance. Okay. ABO blood group is an example of. ABO blood group is an example of. तो इसका आंसर क्या आएगा? मल्टीपल एलेलिज्म. मल्टीपल एलेलिज्म जो है इसका आंसर है. A child is blood group is O. His parents blood group cannot be. A child is blood group is O. His parent blood group cannot be. तो आंसर आएगा AB. ओके. If one parent has blood group A and other parent has blood group B, the offsprings have which blood group? The answer is AB, AB, O. Okay. Ratio 9:7 is due to. The answer is complementary gene. Ratio 9:7 is due to complementary gene. A man of A blood group marries a woman of A B blood group. Which type of progeny would indicate that man is heterozygous A? The answer is B. Okay. A man of A blood group marries a woman of A B blood group. Which type of progeny would indicate that man is heterozygous A? The answer is B. A child of O blood group has B blood group father. The genotype of father would be. The answer is B and O. Andalusian fall exhibit. Andalusians fall exhibit. The answer is phenotypic blending. Epistatic gene differs from dominant gene in. The answer is all of the above. Epistasis gene is non-allelic. Epistatic gene never expresses itself independently. Epistatic and hypostatic genes are present at different loci. Okay. A gene that shows its effect on more than one character. A gene that shows its effect on more than one character is, the answer is pleiotropic gene. Multiple alleles are present. Multiple allele are present. The answer is at the same locus on homologous chromosome. At the same locus on homologous chromosome. Which of the following is the example of pleiotropic gene?
The answer is sickle cell anemia. Which of the following is the example of pleiotropic gene? The answer is sickle cell anemia. Epistasis differs from dominance because epistasis differ from dominance because the answer is in epistasis one gene masks the expression of another pair of gene. Okay, in epistasis one gene pair masks the expression of another pair of genes. Epistasis implies epistasis imply the answer is one pair of genes can completely mask the expression of another pair of gene. The possible blood group of children born to parents having A and AB groups are. The answer is A, B and AB. A man with blood group B marries a female with blood group A and their first child is having blood group B. What is the genotype of child? The answer is B and O. Okay. A child with mother of blood group A and father of blood group AB will not have which of the following blood group? The answer is O. Okay. If mother has blood group B, father has A, the offspring will be of. The answer is any of the above, O, A or AB. Two non-allelic genes produces the new phenotypes when present together but fail to do so independently, then it is called complementary gene. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia is the result of dash dash mutation in the hemoglobin genes. The answer is point mutation. Sickle cell anemia is the result of point mutation in the hemoglobin gene. Okay. When both alleles of a pair are fully expressed in a heterozygote, they are called codominants. Okay. In the inheritance of flower, color in dog flower plant, the F1 had a phenotype that the answer is did not resembles either or of the two parents. तो ये था आपका जो टॉपिक एलिलिक एंड नॉन एलिलिक जीन्स इंट्रैक्शन, वहां से क्वेश्चन थे. जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस टॉपिक से. बाकी अगर मैं समझाने बैठ जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा. हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव को और आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं आपके CU एग्जाम के अंदर. ओके, तो आगे नेक्स्ट भी हम लेकर आएंगे आपके लिए और अच्छे से वीडियो. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है पॉलीजेनिक एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. हम वहां से पूछेंगे, पढ़ेंगे पॉलीजेनिक एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में. नेक्स्ट हमारा ये रहेगा. ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंकेज, सेक्स लिंकेज क्या होता है. सेक्स लिंकेज के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ह्यूमन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स. फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद जो होगा इंपॉर्टेंट वो है जेनेटिक मटेरियल DNA के बारे में. जेनेटिक मटेरियल DNA के बाद हम पढ़ेंगे DNA रेप्लिकेशन, DNA ट्रांसक्रिप्शन, उसके ऊपर क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं. उसके बाद जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसलेशन क्या होता है, जीन रेगुलेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है. ठीक है, ये सब हम आपके लेकर आएंगे. जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इनसे बनेंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे. ओके, तो आप देखते रहिए टीचिंग भी. आज तक के लिए खुदा.